जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। ओटीईटी एग्जाम 2025 रो आज हमर पीवाईक्यू सीरीज रा पार्ट 3 वीडियो आनिछु। आज हम आलोचना करिबा इंग्लिश पैडागोजी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करुच्ची वीडियोटी आपनको भलो लागिबो। निश्चित रूप आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर नेबे। तो चलो देखिबा प्रथम प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, which of these not way to evaluate student interest in English? तो स्टूडेंट इंटरेस्ट इन इंग्लिश को इवालुएट करिया पे कोटा गोटे वे नुहे से पचारची। डज नॉट अंडरस्टैंड द आर्टिकल रिटन इन इंग्लिश। तो प्रथम ही आंसर मिल गला कि डज नॉट अंडरस्टैंड द आर्टिकल रिटन इन इंग्लिश। किंतु आमे कोन अप्लाई करि परिबा ता वेटा कोन ट्रांसलेट मटेरियल फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, माने मदर टंग रु इंग्लिश को करा जिवो कि इंग्लिश रु मदर टंग को दिया जिवो तांको ट्रांसलेट करिबा पाई। तो ये गोटे निश्चित रूप तार वे हम। तो रीड्स बुक्स न्यूज़पेपर मैगजीन्स इटीसी इन इंग्लिश इज ऑन एक्रॉस। ताने कौन से कह बही पढ़ा, खबर कागज पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, ए सब कौन इंग्लिश रो ऑन एक्रॉस। ओके, ताने कौन आम यही सब जिन ये गोटे हम कौन वे हम। टेक्स्ट पार्ट डिबेट्स डिस्कशन ड्रामा इन इंग्लिश ये गोटे आंसर हम। तो आम देखिले कोटा वे नुहे कही वे नुहे कौन डज नॉट अंडरस्टैंड द आर्टिकल रिटन इन इंग्लिश है। एटा हूँ कौन ना गोटे वे नुहे कौन पे इवालुएट स्टूडेंट इंटरेस्ट इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन इंडिकेशन दैट पीपल अंडरस्टैंड नॉर्मल कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो ऑप्शन ए अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। Option B cannot distinguish between English speech sound and the sounds of the mother tongue. Option C grasps the sentence of a length of connected speech. Option D follow the articulation and intonation of the speaker. तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन कही अंडरस्टैंड। तो आंसर कौन हम निश्चित रूप से हम आंसर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंग्लिश स्पीच साउंड एंड द साउंड ऑफ ए मदर टंग। ओके, next question. In order of teachers to be inclusive with their lesson plan involve diversity, they must do which of those things? Option A get to know the student that build and trust, interfere in after school activities, ask question about their life in an interrogative manner, ask about family problems at home and make them student uncomfortable. तो करेक्ट आंसर कौन हम? गेट टू नो द स्टूडेंट्स एंड बिल्ड द ट्रस्ट। कौन पिला मान को जानिबा एवं कौन से ट्रस्ट को जीतिबा एवं से जो सत्यता को गठन करबा अर्थात से जो बिलीवनेस को गठन करबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्राइमरी स्कूल इक्वेशन एंड रिसाइटेशन आर यूज्ड to master all the accept in English except sounds, rhymes, facial expression, intonation. तो करेक्ट आंसर कौन होगा? निश्चित रूप से फेशियल एक्सप्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these can foster the learner's ability summarized and use the language freely? ओके, तो ऑप्शन है लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। तो करेक्ट आंसर कौन हम? निश्चित रूप से राइटिंग हम कि राइटिंग कौन करना फोस्टर द लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज एंड यूज द लैंग्वेज फ्रीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दोज इज नॉट ए कंसीडर एज ए गुड टेक्निक फॉर ए स्टोरी टेलिंग। कोटा से कही कि नॉट ए गुड टेक्निक फॉर द स्टोरी टेलिंग नॉट कंसीडर। तो ऑप्शन ए बिगिन विथ शॉर्ट सीजन्स, यू मे आस्क चिल्ड्रन टेल रैडल्स their mother tongue in English, make comfortable sitting arrangement, tell long confusing stories. तो what is the correct answer? निश्चित रूप से आम आंसर हम टेल लॉन्ग कन्फ्यूजिंग स्टोरीज। एटा गोटे कंसीडर नुहे टेक्निक स्टोरी टेलिंग। आम कौन करिपरिबा? बिगिन विथ शॉर्ट सीजन, छोट छोट सीजन नहीं पढ़ाइबा। देन आस्क द चिल्ड्रन टेल रैडिस इन देयर मदर टंग इन इंग्लिश, तने इंग्लिश कि मदर टंग रे समान छोट छोट प्रहेलिका कहिबे
मेक कंफर्टेबल फॉर सिटिंग अरेंजमेंट ताने पिला मानको प्रथमे सिटिंग अरेंजमेंट ऊपर ध्यान दिया जिवो बट जदि आमे कहिबा गोटे लॉन्ग स्टोरी निश्चित ताकर कंफ्यूजन हबो से माने इरिटेट मध्य हेबे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑप्शन ए एसे बी लेटर सी म्यूजिकल नोट्स डी पोएम तो कहछि नॉट ए फॉर्म ऑफ कंपोजिशन से कहछि then the answer will be 3 musical notes. Musical notes is a not a form of composition. Okay, next question. Which of these is not a strategy to use the develop better listening skills? से कहछि एमाने भितर कोटा गोटे स्ट्रेटजी नुहे कोन बेटर लिसनिंग स्किल को डेवलप करबा पाई ओके option A identifying predictable words or phrases allow the student to hear as much as the target language possible avoid opportunity for discussion ना reading a related text तो करेक्ट आंसर निश्चित रूप से आपण मानकर कोन हबो ना avoid opportunity for discussion ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which of these is not an example of listening activity to use in the classroom option A listening a paragraph as it is read aloud and summarized in your own words, discussing the different skills involved in the writing process, engage in conversation with someone, listen the children's story or rhyme in a fable or proverb. तो निश्चित रूप से आपण मान के आंसर हबो कोन ना डिस्कसिंग द डिफरेंट स्किल इन्वॉल्व इन द राइटिंग प्रोसेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट may feel a great deal of pride when they are able to comprehend something in the English language when their teacher speak them. जेतबे टीचर से मान को कहंती इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट में फील ग्रेट डील अबाउट प्राइड बहुत गर्व अनुभव करंती काहे माने दिस इज द अचीव्ड बाय विथ द स्किल्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग तो निश्चित रूप से हमर आंसर हबो ता करेक्ट आंसर हबो लिसनिंग सुनी कि से माने कोन ना गोटे बड़ डील करंती कि आमे कॉम्प्रिहेंसिव सुनी कि आमे कोन ना बुझी परछु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इंडिया has become dash the medium of instruction the language process of medium the language of administration a compulsory subject of duty तो करेक्ट आंसर कौन हम ए लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गला ओके बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बली रिफर्स द स्किल ऑफ वर्बली कम्युनिकेशन पाई कौन दरकार लिसनिंग और लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और स्पीकिंग तो कौन हम निश्चित रूप से आमर करेक्ट आंसर हम स्पीकिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ डैश pronunciation ना इंटोनेशन ना स्ट्रेस ना पंक्चुएशन जदि आमे देखिबा तो ए क्वेश्चन ले करेक्ट आंसर कोन हबो निश्चित रूप से पंक्चुएशन हबो ओके कैपिटलाइजेशन मींस पंक्चुएशन कंपोनेंट्स ऑफ ए पंक्चुएशन माने कैपिटलाइजेशन करियो माने लेटर गुडी कर कैपिटल करबा ओके कैपिटलाइजेशन दिस मीन सब लेटर को आमे कैपिटल रे लिखिबा दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए पंक्चुएशन ओके pattern practice in control manner is provided through pattern practice in a control manner is provided through dash drilling exercise or substitute table or language activity तो निश्चित रूप से करेक्ट आंसर इज substitution table okay an auditory learner says dash strong memory poor memory ordinary memory habit or forgetting तो निश्चित रूप से हमर करेक्ट आंसर कौन होबा ना स्ट्रांग मेमोरी थाए ऑडिटरी लर्नर्स ओके जेहेतु से सुनी के मन रख दे ऑडिटरी लर्नर्स मीन ही हैज लिसन समथिंग देन दिस इज मेमोराइज टू हर बाय हिम सो इट ही हैज ए स्ट्रांग मेमोरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विदाउट टीचिंग कहछि एमाने भितर कोट आउट है बेस्ट टेक्निक टू प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग okay without teaching pure learning collaborative learning programmed learning cooperative learning तो करेक्ट आंसर कौन होबा निश्चित रूप से हमरा प्रोग्राम लर्निंग ओके the primary reasons in english for exposure and enjoyment are
The primary lessons in English for the exposure and enjoyment are story dialogue, the recitation of the story, action song and dialogue, rhyme and action song. The correct answer is the rhymes and action song. Okay. Next question. Locating facts in the text is scanning, skimming, checking, and summarizing. The correct answer is scanning. Okay. The correct answer is scanning. Good handwriting consists of distinct vinces and the equal spacing, uniformly in shape and size, equal spacing and uniform strokes, all the above. The correct answer is all the above. Okay. एसबू जिन ध्यान देवाक पड़ो निश्चित रूप से जो गुड हैंडराइटिंग ध्यान दौथुवा. Okay. When a test is conducted, find out some deficiencies. It is achievement test, diagnostic test, prognostic test or performance test. आम देखिबा तो करेक्ट आंसर निश्चित रूप हमर कोन हबो ना डायग्नोस्टिक टेस्ट हो. ओके. तो यह थिला हमर इंग्लिश रे शेष क्वेश्चन. आशा करूची भिडियोटी आपण मन निश्चित रूप रे भलो लागिथिबो एवं आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करियो को जमारो भूलिबेनी. धन्यवाद.